Hello friends, welcome to Ecoholics YouTube channel. My name is Avinash and in this video I'll be discussing with you economics current affairs for 9 September 2024. Friends, I have selected 3 articles from the Mint newspaper for discussion. First article is again talking about unified pension scheme. But this article is new in the sense कि इस article के अंदर काफी सारा ऐसा आपको statistics data वगैरह provide करा जाएगा जो कि आपने पहले कभी सुना नहीं है, at least from me, right? So this is not a very difficult article to understand. अगर आपने मेरे previous lectures देखे हैं, unified pension scheme is something that we have covered in detail quite a bit. कई बार discussion हम कर चुके हैं. We are discussing various facets of this particular aspect now. हमने जो कोर मुद्दा है वो अंडरस्टैंड कर लिया है, डेफिनेटली उसमें कोई डाउट नहीं है. बट अब हम क्या कर रहे हैं कि उसका जो 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसको हम लोग डेवलप करने लग रहे हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई डिस्कसिंग दीज आर्टिकल्स इज इंपॉर्टेंट. Second article is talking about the fact that India is thinking of creating a sovereign wealth fund, right? What is a sovereign wealth fund? ये हम understand करेंगे. How India is planning to create its sovereign wealth fund, ये भी हम understand करेंगे. And the third article is talking about maritime development fund. So why is it that India is thinking of creating a maritime development fund? What will be the implications of creating this kind of a fund? This is also something that we will be discussing. Okay, so these are the 3 articles that I have selected from today's newspaper that I want to discuss with you guys. Let us start with our discussion. पहले बात करते हैं UPS के बारे में, right? So see, UPS का impact is going to be on the central finances as well as the state finances, because central government के भी employees retire करते हैं and they receive pension. State government employees also retire and they also receive pension, right? So something which is very important for you to note is that state government's pension liabilities is much higher than central government's pension liabilities in absolute terms, right? Keep that in mind. Okay, so that is a very important aspect that we need to see कि कौन से स्टेट के ऊपर क्या प्रकार का इम्पैक्ट आने वाला है यूपीएस का एटसेट्रा, राइट? So if you look at this number that between 2016 and 2024, okay, combined pension expenditure increased from 12.7% per year, increased to 12.7% per year against 9% for the center. So states का जो expenditure है, right, that is 12.7%. center का जो expenditure है वो 9% है, right? So we have already discussed in our previous lectures that old pension scheme was about defined benefit. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि old pension scheme was about defined benefit? Because उसके अंदर पूरा का पूरा expenditure was on the government, right? And you as an employee would receive a pension amount that was fixed. You knew what that amount was. There was no variability that was there in that system. So old pension scheme के अंदर पूरा जो burden था that was on the government and the pension amount was fixed. In the new pension scheme that we started in 2004, this scheme is all about defined contribution. What do I mean by defined contribution? So what will you as an employee contribute is fixed. What will government as your employer will contribute is fixed. So the amount is fixed. So it's not as if that the entire burden is on the government. Employees also have to contribute. And जो pension आपको मिलेगी, right? That pension is not fixed. It is determined by market returns, right? सो सारा का सारा पैसा को इकट्ठा करके जो है स्टॉक मार्केट के अंदर लगाया जाएगा, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करा जाएगा एंड स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर आपका पेंशन अमाउंट डिपेंड करेगा, राइट? सो दिस वाज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम बिकॉज द कंट्रीब्यूशन वाज डिफाइंड, बट व्हाट यू विल गेट एज अ पेंशन वाज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड. सो इट्स नॉट एज इफ दैट आपको पेंशन अच्छा नहीं मिलेगा. आपको पेंशन अच्छा मिलेगा बिकॉज स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इज इन द राइट डायरेक्शन. आपको पेंशन अच्छा मिलेगा, बट पेंशन क्या रहेगा, दैट इज समथिंग दैट इज dependent on market returns, right? Now what was happening of late was कि ये NPS जो है इससे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज खुश नहीं थे फॉर ऑब्वियस रीजंस. NPS के अंदर पेंशन अमाउंट फिक्स नहीं था, कंट्रीब्यूशन फिक्स था. सो विद NPS गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वर नॉट हैप्पी, राइट? So several states, especially those states that were ruled by opposition political parties, Rajasthan, Jharkhand, Chhattisgarh, Punjab, they went back to OPS. They went back from NPS to OPS. Like I explained to you that state governments जो है even they are having their employees. So whether they follow NPS or whether they follow OPS, that is their choice. Central government cannot mandate
that you as a state government need to follow X pension system or Y pension system. Central government cannot make it mandatory, right? So the states, they can choose which system they want to follow, because state government themselves are employers. They are bearing that expenditure and they are wanting to take care of the welfare of their employees. So whether they do it through NPS or OPS, you cannot dictate it to them. So कई सारे states they were going back to OPS, and बाकी states के ऊपर political pressure था, right? कि अब let us say for example if Rajasthan is offering OPS, so why is it that Uttar Pradesh is not offering OPS, right? And why is it that Madhya Pradesh is not offering OPS if Rajasthan is doing, right? So there was a lot of political pressure upon other states as well. Now let us understand what's happening, right? So in 2023-24, if you look at the combined pension expenditure of 31 states and UTs, so that was 12% of their total revenue expenditure. जो भी revenue expenditure वो लोग कर रहे हैं, I hope you know the meaning of the term revenue expenditure. Expenditure on salary, pension, interest payment, expenditure on giving grants, right? This is expenditure on subsidy, right? This is all revenue expenditure. It doesn't lead to creation of assets, it doesn't lead to reduction of liabilities. Revenue expenditure जो है वो डे टू डे प्रकार का एक्सपेंडिचर है, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन चलाए रखने का एक्सपेंडिचर है, राइट? So if you look at the revenue expenditure, 12% of revenue expenditure was going only and only towards pension, right? 25 states and UTs के अंदर 10% of revenue expenditure was going towards pension. अब ये जो यूपीएस को हम लोग लेकर आ रहे हैं, व्हाट इज यूपीएस? यूपीएस के अंदर क्या होएगा कि गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉय विल कंट्रीब्यूट, ऐसे करके एक अमाउंट विल गेट कलेक्टेड, दैट अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट, दैट अमाउंट विल ग्रो, and the pension amount that will be paid, that is fixed. So if this amount that has grown is sufficient, then fantastic, government doesn't need to contribute anything to the final pension that is being paid out. But if this amount is not good enough, then the government will have to contribute again, right, to make sure that a fixed pension is paid to the employer, right? So employee का भी contribution है, market का भी determination है, and finally एक fixed amount भी है. That is what the feature of UPS is, that is Unified Pension Scheme. We already discussed this number of times. Now the hope is that एक बार जब हम UPS को introduce कर देंगे, so probably states will not go back to OPS, right? They will probably go back to UPS, right? जहाँ पर जो employee का contribution है वो भी रहेगा, market का एक factor है वो भी रहेगा. So there is a hope that at least in the immediate term, at least in the short term, जो state government का expenditure on pension है, that will come down because of the fact that employees will continue to contribute. Because अगर state governments directly NPS से उठकर OPS में चले जाते हैं, right, तो पूरा का पूरा expenditure burden जो है वो government के ऊपर आ जाता है. But अगर हम OPS में ना जाकर UPS में चले जाएं, right, तो इसके अंदर कैसा होता है कि employee का contribution भी है, number one, and number two, जो फिक्स्ड पेंशन की रिक्वायरमेंट थी उसको भी हमने मीट कर दिया है. सो दैट इज व्हाई दिस आर्टिकल इज सेइंग कि द फैक्ट दैट स्टेट्स विल नाउ प्रोबब्ली गो फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस मींस दैट उनका जो पेंशन लायबिलिटी है वो कंट्रोल में रहना चाहिए, रिलेटिवली स्पीकिंग. दिस ग्राफ इज वेरी इंस्ट्रक्टिव, राइट? आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन बाय स्टेट गवर्नमेंट्स 5.22 लाख करोड़ एंड एक्सपेंडिचर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पेंशन इज 2.6 lakh crore. So you can clearly see that the states are spending double the amount of money on pension that the central government is spending together, right? And this graph is also very instructive. You can see that 25 states and UTs are spending more than 10% of their revenue expenditure on pension. There are states which are spending more than 15%. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, Nagaland, Mizoram, right? So these are the states. Kerala, they are spending more than 15% of their revenue expenditure on paying pension, right? Now let us talk about something which we have never spoken about. अब जो सेंटर का जो पेंशन स्पेंडिंग है that is 2.67 lakh crores. ये 2.67 lakh crore के अंदर से 1.41 lakh crore is going towards defense pension. जो आर्म्ड फोर्सेस के हमारे जो मेंबर्स रिटायर होते हैं उनकी पेंशन के लिए वी आर स्पेंडिंग 1.41 lakh crore, right? That's a huge amount of money, right? If you look at the pension payment to defense personnel, so that is around 25% of the defense expenditure.
25% ऑफ द डिफेंस एक्सपेंडिचर इज टुवर्ड्स पेंशन. अब जो डिफेंस का जो मैटर है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट वन रैंक वन पेंशन स्कीम, right, within the defense forces. What is one rank one pension scheme? So let's say that you retire as a major in 1980, I retire as a major in 1990, somebody else retires as a major, let's say in 2024. वन रैंक वन पेंशन सेज, अब ये जो लास्ट में जो ये मेजर साहब रिटायर हुए हैं, राइट, सो उनकी पेंशन विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सैलरी दैट दे हैव ड्रॉन, लास्ट सैलरी दैट दे हैव ड्रॉन. ठीक है, वन रैंक वन पेंशन सेज दैट ये मेजर साहब जो लास्ट में रिटायर हुए हैं, इनकी जो भी पेंशन बनेगी वही पेंशन शुड बी पेड टू दिस मेजर साहब ऑफ 1990 एंड दिस मेजर साहब ऑफ 1980. दैट इज व्हाट वन रैंक वन पेंशन इज सेइंग, राइट. तो उससे क्या होएगा कि ये जो ओल्डर पेंशनर्स हैं, they will benefit from increase in pay of existing service members. So ये existing service member की सैलरी ज्यादा थी, right, तो naturally उनकी पेंशन ज्यादा रहेगी. Let's say 50% of the last drawn salary अगर पेंशन है, right, तो लास्ट ड्रॉन सैलरी तो इनकी ज्यादा थी. 1980 के अंदर इनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कम थी, राइट, तो वो पेंशन बढ़ बढ़ के धीरे धीरे बढ़ी है, राइट. बट अगर मैं इनकी सैलरी के बेसिस के ऊपर सबको पेंशन देने लग जाऊं, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द ओल्डर पेंशनर्स विल बेनिफिट बिकॉज दे विल गेट पेंशन on the basis of the pay of the existing service members, right. So already government of India has accepted one rank one pension in 2016, already ये implement कर दिया गया है, फिर भी requirements अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, right. So I am saying that defense pension is a significant amount of expenditure and that can only increase going ahead, it will not decrease, right. बात करते हैं रेलवे की दोस्तों, right. रेलवे की अगर आप पेंशन देखोगे, right, तो उसके अंदर आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि द अमाउंट ऑफ पेंशन दैट रेलवे इज पेइंग इज इंक्रीजिंग, राइट. सो अर्लियर वी आर पेइंग 35,000 crores, नाउ वी आर पेइंग 67,000 crore in the form of pension, right. And you can see that pension is forming around 25% of the revenue that the railway is earning. अब रेलवे के पास खुद के पास तो कमाई है नहीं, राइट, उतनी ज्यादा जितना उनको चाहिए, जो उनका खर्चा है. So railway is dependent on government of India directly or indirectly for support. So you have to keep in mind that आज नहीं तो कल जो रेलवे के इंक्रीज पेंशन का बर्डन आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ही आएगा, राइट. सो वेदर इट इज योर रेलवेज और वेदर इट इज योर पीएसयूज और वेदर इट इज योर पीएसबीज, इन सबका जो पेंशन का जो खर्चा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बुक्स में नहीं दिखाई देता है. कीप दैट इन माइंड. और ये खर्चा आज नहीं तो कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आएगा डायरेक्टली एंड डायरेक्टली बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस. कीप दैट इन माइंड, राइट. So that is what you need to understand, that expenditure of these enterprises, these organizations, expenditure on defense, ये सारी चीजों को हमारे को फैक्टर इन करना पड़ेगा. स्टेट लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को हमारे को फैक्टर करना पड़ेगा, राइट. नाउ इफ यू सी, राइट, so nearly half of salaried Indians don't have social security. Half of salaried Indians, they don't have any kind of social security, right. सो ये जो हम पेंशन वगैरह की बात कर रहे हैं ये सिर्फ पीएसयू एम्प्लॉइज के लिए एप्लीकेबल है, राइट. सो गवर्नमेंट के पास एक ओल्ड एज सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी पेंशन स्कीम है फॉर एल्डरली, फॉर विडोज, फॉर डिसेबल्ड, राइट. बट उसके अंदर मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ मनी इज बीइंग स्पेंट, मिनिस्क्यूल अमाउंट ऑफ मनी. एंड मोस्टली जो हमारी गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है दैट इज फॉर बीपीएल हाउस होल्ड्स, दैट इज नॉट फॉर अदर्स. तो ये जितना भी हम रामायण अभी हमने डिस्कस करी है, ये सारी की सारी रामायण जो है वो एप्लीकेबल है टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड नॉट सो मच टू एवरीबडी एल्स, ठीक है. दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर. सो बेस्ड ऑन दिस आई हैव गिवन दिस वन क्वेश्चन टू यू फॉर आंसरिंग, राइट, कि व्हाट इज द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड यूपीएस on state pension liabilities and employee contributions considering trends in pension expenditure and political pressure faced by states. So reading this article after this discussion, you are perfectly capable of trying to answer the above question, right. My second article is on India's sovereign wealth fund, right. So friends, there is some issue that I am facing. Let me discuss this second and third article in tomorrow's lecture with you, right. We'll start a little early. Let me discuss this tomorrow with you guys, right. Don't worry, this will not go undiscussed from my end. Sorry that today's lecture is a short lecture. Let me discuss this tomorrow with you guys. Thank you.